Students, how are you all? I hope you all are fit and fine and safe at your home. So yesterday we have done the comparing of numbers, comparing of 3-digit numbers. I hope the concept was clear. So today our topic is ordering numbers. Today our topic is ordering numbers. Ordering numbers in first part is ascending order and the second part is descending order. So first part is ascending order. Ascending order means arranging numbers from the smallest to the greatest. It means कि हम numbers को arrange करते हैं smallest से लेके greatest तक, मतलब सबसे छोटे number से लेके हम सबसे बड़े number तक. Like जैसे like 1, 2, 3, 4, 5. स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट. अरेंजिंग नंबर में हम असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं कि जो स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट नंबर तक जाते हैं. सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा. अर्लियर वी हैव डन इन 1 digit, 2 digit. So today we will do in 3 digit. So we take a numbers like 265, 182 and 329. We have 3 numbers. So firstly we write the smallest number. How we know which is the smallest number? The smallest number is, firstly we see the 100 place value. 100 place value, this is 3, this is 1 and this is 2. So which is the smallest? 1. So the smallest number is 182. The smallest number is 182. And second, which is the bigger than 182? 182 से कौन सा नंबर बड़ा है? 2 और 3? 2. So we write here 265. First is 182, second is 265, and last, the final, the greatest number is 329. Clear? Firstly we write the smallest number and then greatest number and then last biggest number. Clear? Now we take another numbers. 455, 381, 152. So we have 3 numbers again. Which is the smallest number? Firstly we will see the 100 place value. 100 place value. This is the 4, this is the 3 and this is the 1. 100. So smallest number is 152. छोटा नंबर कौन सा है सबसे? 152. And then इससे बड़ा नंबर, smaller to bigger, इससे बड़ा नंबर कौन सा है? 4 और 3. So इससे बड़ा नंबर है 381. And then the greatest number is 455. सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 455. Ascending order means arranging the numbers from smallest to the greatest. Clear? So we take another examples. 356, 325, 338. So in these numbers 100 place value are same. इन numbers में 100 place की जो value है वो क्या है? Same है. So we take tens place value. We see the tens place value. Tens place value. Here is 3, here is 2 and here is 5. Here is 56, 25 and 38. So which is the smallest number? The smallest number is 2.
So we write here 325. 325 is the smallest number and 325 से बिगर नंबर कौन सा है इसमें? 325 के बाद यहाँ 5 है एंड यहाँ पर 3 है. तो विच इज द बिगर नंबर? द बिगर नंबर इज 338 and the greatest number is 356 and the greatest number is 356. If we have same number in 100 place value, so we take the 10th place value numbers. Clear? अगर हमारे पास सेम नंबर है 100 प्लेस वैल्यू पर, तो हम वहां से 10th प्लेस वैल्यू से नंबर्स को देखकर उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे. क्लियर? The second part is descending order. Descending order means arranging numbers from the greatest to smallest. Greatest to the smallest, like 4, 3, 2, 1. From the greatest to the smallest. मतलब बड़े से लेके छोटे तक का. बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा एंड देन उससे छोटा. Descending order means the greatest to the smallest. Firstly, we take the numbers. 219, 345, 188. Okay. In this number, which is the greatest number? Firstly, we see the 100 place value. So, which is the greatest? 2, 3 or 1? The 3 number. So, 345 is the greatest number. 345 is the greatest number. And then the smaller number is 2 or 1. 3 से छोटा नंबर देखना है हमें कि 3 से पहले छोटा नंबर कौन सा है? 2 और 1. तो 3 के बाद जो नंबर आएगा वो आएगा 219. 219 and the smallest number is 188 and the smallest number is 188. So biggest number, greatest number is 345 and then 219, 219 and 188. Another numbers 246 and then 857 and 643. We take another numbers. So 246, 857 and 643. So which is the biggest number? Greatest number is 2, 8 or 6? 8. 8 is the greatest number. So 857 is the greatest number. Clear? Next is firstly second 857 के बाद after 857 we have the smallest number is 643 and then last is 246. 246 is the smallest number. सबसे बड़ा नंबर 857 है, उसके बाद 643 and then 246. So now we take another numbers. 643, 678 and 625. So in this we have same numbers in same digit in 100 place value. 100 place value में हमारे पास same digit है, तीनों जगह पे 6 number है. So we see the number of 10th place. हम 10th place के नंबर को देखेंगे. अब हम 10th place के नंबर को देखेंगे तो उसमें हमें क्या है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है. कौन सा नंबर बड़ा है? 443, 778 और 225. So which is the greatest number? The greatest number is 678 and then 643 and the last and smallest number is 625. The biggest number is 678 and the smallest number is 625.
So now students, open your maths book, page number 69, exercise 5F. Open your maths book, page number 69, exercise 5F. Firstly, write the date and class work. Write the date and class work. So, our first question is, write the given number in ascending order. अब हमें जो नंबर्स दिए हैं उसको हमें ascending order में चेंज करना है. किस में चेंज करना है? ascending order में. So, first is number is 499, 389, 564 and 986. So, firstly we see the 100 place value. The 100 place value is here is 4, here is 3, here is 5 and here is 9. So, which is the biggest number? Biggest number is 9 and the smallest number is 3. So, firstly we will take the smallest number because ascending means smallest to greatest. So, 389 is the smallest number, and then after 3, 499, and then 564, and the last and the biggest number is 986. Firstly we write the smallest number and the last we write the biggest number. Clear? So second is 444, next number 204, 440 and 424. Clear? So here we have a same number in 3 numbers, same value in 3 numbers in 100 place, 4, 4 or 4, but we have one number 204. So 204 is the smallest number. 204 is the smallest number, and then 444, 440 or 424. So we have same numbers in 100 place. So we see the value of tens place. So here tens place value is 4. Here tens place value is also 4 and here is 2. So which is the smallest number? The smallest number is 424. The next number is, here is value same in tens place, 4 and 4. सेम वैल्यू है दोनों जगह टेंस प्लेस पर. तो हम कौन सा नंबर लेंगे? वंस प्लेस की वैल्यू का. वंस प्लेस पे हेयर इज 4 एंड हेयर इज 0. तो विच इज द स्मॉलेस्ट? 0. सो 440 एंड देन ग्रेटेस्ट नंबर इज 444. क्लियर? रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू डू योरसेल्फ. एंड नेक्स्ट इज राइट द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. अब क्या करना है? अब हमें नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, छोटा करके लिखना है. ठीक है? सो पहले हमें क्या लिखना है? सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर. क्लियर? यानी कि बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट. सो फर्स्टली वी सी द बिगेस्ट नंबर 4, 2, 5 and 8. So which is the biggest number? 8. So firstly we write here 876. 876. Next is 2, 4 or 5. So next number is 567 and then 471 and then 239. Biggest number is 876 and the smallest number is 239. Next we have a number 297, 456, 671 or 742. So which is the biggest number? 7, 6, 4 or 2. So 7 is the biggest number. So 742 is the biggest number. And then 671 and then 456. And the last and the smallest number is 297. Clear students?
सो आपको भी इसी तरह बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आपको खुद से करने हैं. ओके, दिस इज योर होमवर्क. I hope students you all are understand the topic of ascending order and descending order. So thank you. Have a nice day.